Good evening, student. After the facilitated diffusion, the substances are getting transported inside the cell. Now, depending upon if a substance is getting transported alone or in combination, and if the substances are moving in combination, then they are going in the same direction or in opposite direction. There are three types of transport we are having in cells. So depending upon कि the substance is transporting alone or in combination, so we have to remember कि the substance which is getting transported, it is going alone or in combination with other substances. Okay, and if they are transporting in combination, either they are going in same direction or different direction. We can have three types of transport inside the cell. Firstly, if the substance is going alone through the protein channel, then such type of transport is called as uniport. Uni means single, port means channel. So in the lipid bilayer of plasma membrane, so these are the phospholipids molecule. And in these phospholipid molecules, we are having certain transmembrane proteins which will act as channels. So this is a channel which is actually a transmembrane protein, and if this channel is allowing only one substance at a time, then this type of transport is called as uniport. So this will allow only one substance at one time to pass through it. Simply we can show this transport like this, कि only one substance is transporting across the channel, then such type of transport is called as uniport. Now the second type of transport, if the substances are moving in combination, then it is called as symport. For example, if the substances are moving in combination and they are moving in a same direction, let's say for example कि this is a certain transmembrane protein and if it is transporting two substances, sodium as well as glucose, and these two substances are getting transported in a same direction. So sodium is also going from outside to inside, as well as the glucose is also going from outside to inside, then such type of transport is called as symport. Clear for this thing? And thirdly, we can have two substances which are moving in opposite direction, and such type of transport is called as antiport. Anti means opposite, port means a channel. So this is the protein channel, and through this protein channel one substance is moving in while the another substance is moving out. Let's say for example a sodium potassium pump which will transfer the sodium outside of cell, and at the same time it will transfer the potassium inside the cell. So in this case, two substances which are moving in combination but they are moving in opposite direction, so such type of transport is called as antiport. Clear? हमने ऐसा कहा कि जब भी हम ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे इनसाइड द सेल, तब दो चीजें हो सकती है. कोई भी सब्सटेंस जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, या तो वो सिंगली ट्रांसपोर्ट हो सकता है यानी अकेला, या तो फिर वो कॉम्बिनेशन में ट्रांसपोर्ट हो सकता है किसी और सब्सटेंस के साथ. लेकिन जब वो किसी और सब्सटेंस के साथ ट्रांसपोर्ट होगा, तो एक तो वो सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होगा या तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होगा. इस सभी ट्रांसपोर्ट के लिए हमको ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स चैनल चाहिए जो ये सारी ट्रांसपोर्ट करेंगे. सो उसमें पहले एग्जांपल में हमने देखा कि अगर अकेला सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड,
That type of transport is called as uniport. Let's say for example we are having calcium channels on presynaptic membrane, which will allow the movement of only calcium ion. Clear? So such type of channels comes under uniport. सेकेंडली हमने ऐसा कहा कि अगर दो सब्सटेंस कॉम्बिनेशन में मूव कर रहे हैं और वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो देन दैट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज सिम्पोर्ट। इसमें हमने एग्जांपल लिया एक सोडियम ग्लूकोज चैनल का जिसमें सोडियम और ग्लूकोज एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होंगे। सच टाइप ऑफ चैनल्स आर सीन इन केस ऑफ इंटेस्टाइनल सेल जिसमें सोडियम और ग्लूकोज एक साथ अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। और तीसरा जो टाइप है उसमें दो सब्सटेंसेस एक साथ ट्रांसपोर्ट होते हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया सोडियम पोटेशियम पंप का। दिस सोडियम पोटेशियम पंप will actually transport two substances. One is sodium, एक सोडियम है और दूसरा पोटेशियम। लेकिन सोडियम सेल से बाहर की तरफ जाएगा और पोटेशियम सेल में अंदर की तरफ आएगा। ये साइमल्टेनियसली होगा, एक साथ होगा, इसीलिए सच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज एंटीपोर्ट। एंटी मीन्स अपोजिट एंड पोर्ट मीन्स चैनल। सो अ चैनल ट्रांसपोर्टिंग two substances in opposite direction is called as antiport. So this is all about the movement of substance in case of transport of substances across the cell. Now in the next video we'll try to learn about the active transport process. Thank you.